Hi everyone, my name is Dhruv and in this video I'll be talking about my SCMHRD interview experience. तो मेरे स्नैप में अराउंड 99 परसेंटाइल आए थे एंड आई हैड कॉल्स फ्रॉम बोथ SIBM पुणे एज वेल एज SCMHRD पुणे. तो मैं SIBM पुणे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट माई SCMHRD इंटरव्यू एक्सपीरियंस. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर इट इवन स्टार्टेड वी वर ऑल मेड टू जॉइन अ जूम मीटिंग. और उस जूम मीटिंग में उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया कि GPI प्रोसेस कैसे चलेगा, हाउ विल आर GE बी कंडक्टेड एंड हाउ आर PI विल बी कंडक्टेड. उसके बाद हम सबको 7 पैनल्स में बांट दिया और सबको GE के लिए भेज दिया. GE इज बेसिकली ग्रुप एक्सरसाइज, राइट. SCMHRD और SIBM वाले ग्रुप डिस्कशन को ग्रुप एक्सरसाइज बोलते हैं. सो वी ऑल वेंट फॉर द ग्रुप एक्सरसाइज एंड देन स्टार्टेड आवर GE. सो ग्रुप एक्सरसाइज में हमारे 2 पैनल्स थे. बोथ वर अराउंड 65 years ओल्ड एंड बोथ वर मेल. और 10 लोग थे, 10 स्टूडेंट्स, राइट. तो हमें फिर उन पैनल्स ने टॉपिक दिया हमारे ग्रुप एक्सरसाइज का, विच वॉज व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू सेफ गार्ड योर पीपल इन योर स्टेट इफ अ साइक्लोन occurs in your state, right? So this was the topic, right? And let's say that state was something like Odisha, right? तो ये हमारा टॉपिक था GE का. एंड देन द GE स्टार्टेड. तो GE जब स्टार्ट हुआ तो सबको एक एक मिनट मिला बोलने के लिए टॉपिक के बारे में. एंड देन द डिस्कशन वेंट ऑन फॉर अराउंड 10 minutes. उसके बाद सबको एक एक मिनट मिला कंक्लूड करने के लिए. सो बेसिकली इट वेंट लाइक दिस. एवरीवन गॉट द चांस टू स्पीक फॉर 1 minute ईच. उसके बाद 10 minutes का डिस्कशन. उसके बाद एवरीवन अगेन गॉट अ चांस टू स्पीक फॉर 1 minute ईच. सो दिस वॉज हाउ आवर GE वेंट. GE वॉज वेरी चिल. एवरीवन गॉट एनफ टाइम टू स्पीक. उसके बाद हमें वापस भेज दिया अपने पैनल रूम्स में, जहाँ पे एक एक बच्चे को PI के लिए भेज रहे थे. तो आफ्टर दिस स्टार्टेड माई PI. So I had the same panels for both the processes, GE and PI. तो जब मैं अपने पैनल रूम में गया तो सेम पैनल्स बैठे थे. एंड देन दे लुक्ड एट मी एंड आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन 20 seconds. एंड देन दे एडेड समथिंग टू इट. उन्होंने बोला दे डोंट वॉन्ट टू हेयर अबाउट माई करियर और एनीथिंग एल्स. दे जस्ट वॉन्ट टू हेयर अबाउट माई फैमिली, how I grew up, what degree I decided to pursue, why I decided to pursue it, etc. etc. So I started off with how many people are there in my family, where I live, something about my city, why I decided to pursue the degree that I was pursuing. So I was basically pursuing BSc Honors Computer Science at that time from Delhi University. So that is what I told them. And the second question came, why did you decide to pursue BSc over BTech? तो इसका आंसर मैंने दे दिया. आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर दिस आंसर, तो इसका आंसर मैंने दे दिया. उसके बाद दे आस्क्ड मी 3 differences बिटवीन BSc एंड BTech. तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया. अबाउट द नंबर ऑफ ईयर्स, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन BSc एंड BTech, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैंने आंसर दे दिया. उसके बाद दे आस्क्ड मी कि वाई डिड यू नॉट चूज BTech ओवर BSc. अगेन आई रिपीटेड माई फर्स्ट आंसर. जो मैंने पहला आंसर बोला था कि वाई आई चोज BSc, मैंने इसमें ही बोल दिया, इसमें वापस रिपीट कर दिया वो आंसर कि वाई आई चोज BSc ओवर BTech, राइट. उसके बाद दे आस्क्ड मी, यू told me something about your sibling. So I have a sibling, right? So they asked me what degree is she pursuing? Is she liking her degree? What job does she aspire to do? Etc. etc. They asked me some questions about my family, right? Now they asked me that have you lived in both Jaipur and Delhi? And I said yes sir, I have lived in both Jaipur and Delhi. So they asked me that क्या डिफरेंस लगा दोनों सिटीज में. सो आई टोल्ड देम कि जयपुर इज अ वेरी स्लो मूविंग सिटी एंड दिल्ली इज अ वेरी फास्ट मूविंग सिटी. सो दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू मीन बाय स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग. सो आई टोल्ड देम दैट व्हेन आई लुक at career opportunities or anything else in Jaipur, I realized that there are very few of them and the competition is very less intense compared to Delhi. Since Delhi is very populated and the competition is very intense, so if you try to slack off in anything, अगर थोड़ा सा भी slack off किया तो some other people will take over your opportunities. So you cannot slack off in a fast moving city, whereas in a slow moving city the competition is less intense, so you have more opportunities there. There's less competition, so more opportunities and more easily and readily available opportunities.
So I think they were impressed with my answer, so they smiled and they asked me, why do you want to pursue an MBA? तो इसका भी आंसर मेरा प्रिपेयर्ड था, मैंने बता दिया, राइट. नाउ नेक्स्ट दे आस्क्ड मी कि okay, you want to pursue an MBA, that's all right. They asked me, why do you want to pursue an MBA from SCMHRD? Now I told them about my interest in HR and how SCMHRD is a very good college for HR. And I think they were not very impressed with my answer क्योंकि both of them were marketing professors, जो मुझे बाद में पता चला. But again, they were not impressed with my answers because मेरा आंसर से ऐसा लग रहा था कि HR is the only specialization that I want to pursue and that is the reason I want to pursue an MBA. So I realized my mistake and I tried to correct it, but फिर वो correct नहीं हुआ. So again, I was in a bit of a trouble with that answer of mine. But then they moved on. So the next question was, what is a dream company? So I told them that my dream company is Hindustan Unilever Limited और ये कंपनी SCMHRD में हायर कर चुकी है पास्ट में. So I told them that this company is also in your placement reports and that is another one of my reasons to join SCMHRD. So they started smiling again and then they ended my interview. Like my interview was very short. Then before ending, they asked me a question that, do you know this company called Mondelez? And I said, yes, sir, I know Mondelez. So if you do not know Mondelez, Mondelez is basically the parent company of Cadbury, right? So they asked me, do you know about Mondelez? And I said, yes, sir. So they asked me to tell me, to tell them a competitor of Mondelez along with three differences between Mondelez and the competitor, right? So मैंने कुछ टाइम मांगा उनसे और फिर मैंने बोला द कॉम्पिटिटर आई टॉक अबाउट इज नेस्ले और मैंने तीन डिफरेंसेस बता दिए मॉन्डेलीज और नेस्ले में. उसके बाद हमारा प्रोसेस एंड हो गया. उसके बाद मेरे को वापस ब्रेकआउट रूम में भेजा, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड देन द प्रोसेस एंडेड. दिस वॉज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट प्रोसेस और बहुत जल्दी ओवर हो गया एंड दिस वॉज मच स्मूदर देन द SIBM प्रोसेस ऑनेस्टली, क्योंकि SIBM में यू आर मेड टू जॉइन अ लॉट ऑफ ब्रेकआउट रूम्स एंड इट वॉज वेरी क्योटिक, बट SCMHRD वॉज वेरी चिल and very well managed. So this was my whole SCMHRD interview experience. Thank you.